Today we are going to start with chapter number 1, investment basics. So, what is an investment? Investment क्या होती है? The money you earn is partially spent and the rest is saved for meeting the future expenses. Instead of keeping the savings idle, you may like to use the savings in order to get a return on it in the future, and this is called as an investment. इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा आप अर्न करते हैं अपनी जॉब करके, द मनी दैट यू अर्न इज पार्शली स्पेंड, वो आप अपनी नीड्स पे स्पेंड कर देते हो और जो रेस्ट बच जाते हैं वो आप सेव कर देते हो अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग वो जो फ्यूचर सेविंग्स हैं वो आप ऐसे ही आइडल रखने की जगह आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां आपको कुछ रिटर्न मिले. उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे. द मनी यू अर्न इज पार्शली स्पेंड and the rest is saved for meeting the future expenses. Now, instead of keeping those savings idle, you may like to use those to get a return on it in the future, and that is called as an investment. So, investment is clear. Now, we are moving towards the next topic, that is, why should one invest? क्यों हमें invest करना चाहिए? We should invest to earn a return on your idle resources, to generate a specific sum of money for a specific goal in life, and make a provision for an uncertain future. हमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने आइडल रिसोर्सेज पे कुछ रिटर्न पा पाएं. दूसरा इसलिए ताकि हम कोई एक स्पेसिफिक सम ऑफ मतलब कुछ स्पेसिफिक लमसम अमाउंट ऑफ मनी अपने किसी गोल के लिए इकट्ठा कर पाएं. और तीसरा ये है कि हमारा जो अनसर्टन फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए कुछ, क्योंकि हमारे बैंक में बैलेंस होगा. दैट्स वाई. नाउ अब जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट. तो one of the important reasons why one needs to invest wisely is to meet the cost of inflation. Now, inflation is the rate at which the cost of living increases. अब एक important reason है कि हमें क्यों invest करना चाहिए, वो है inflation. Inflation means महंगाई. Now, जब inflation होता है तो हमारा जो cost of living है वो obviously increase होगा, right? तो इसलिए inflation is the rate at which the cost of our living increases. The cost of living is simply what it costs to buy the goods and services you need to live. Okay, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. मैं ये साइड पे यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ तो आप यहाँ से देख लीजिएगा. सो हमारा फॉर्मूला इन्फ्लेशन का क्या होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस द रेट एंड दिस n इज इक्वल्स टू टाइम, r इज रेट एंड दिस इज +1. ये हमारा इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला है. ओके. So, now, this is why it is important to consider inflation as a factor in long-term investment strategy. Inflation मतलब महंगाई, और हमें अगर अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करनी है तो हमें इस फैक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा. बिकॉज इन्फ्लेशन, क्योंकि जो गुड हम आज खरीद पा रहे हैं उस पैसे में वो सेम गुड हम 30 सालों के बाद उन पैसों में नहीं खरीद पाएंगे. इसलिए हमको इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है. Now, remember to look at an investment's real rate of return. जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रियल रेट ऑफ रिटर्न होगी, which is the return after the inflation. जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रियल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन होगी. The aim of the investments should be to provide a return above the inflation. जहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें जो रिटर्न्स मिले वो इन्फ्लेशन रेट से अबव मिले. जैसे अगर 6% इन्फ्लेशन रेट है तो हमें 8% कम से कम अपने आप को इंटरेस्ट रेट हमें लेना होगा, तभी हम प्रॉफिट में जाएंगे, वरना हमारा लॉस होगा. Next topic is when to start investing. The sooner one starts investing, the better. By investing early, you allow your investments more time to grow, whereby the concept of compounding increases your income by accumulating the principal and the interest or dividend earned on it year after year. The 3 golden rules for all investors are. Now, हमें कब investing start करनी चाहिए, और जितना आप जल्दी invest करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा returns मिलेंगे. तो you need to invest early. You need to invest regularly, and you need to invest for a long term and not a short term. These are the 3 golden rules which are really important. Now, we need to invest early, invest regularly, and invest for a long term and not a short term. Now, what care should one take while investing? I will explain you 5 important points which you should note down for exam. Now, before making any investment, one must ensure to obtain written documents explaining the investment. अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले
आपको उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे जो उस आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करते हों. यू शुड ऑलवेज ऑब्टेन द रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेनिंग इट. द नेक्स्ट इज जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको अंडरस्टैंड करें एंड रीड करें. रीड एंड अंडरस्टैंड सच रिटन डॉक्यूमेंट्स. Then verify the legitimacy of the investment. Now here the word legitimacy means you need to verify if it's true or not. वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं आप उसको वेरीफाई करिए. पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पहले एक रिटन डॉक्यूमेंट लीजिए. फिर जो रिटन डॉक्यूमेंट आपको देंगे आप उसको रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए. फिर उसको आप वेरीफाई उसकी लेजिटिमेसी को वेरीफाई करिए. नेक्स्ट इज देन फाइंड आउट द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट. फिर उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो आप देखिए. Costs and benefits associated with the investments. After that, you should know the liquidity and the safety. फिर आप उसकी liquidity और safety aspects देखिए और आप उसको compare करिए with the other investment opportunities which are available to you. ठीक है, अब मैंने आपको कौन से 5 पढ़ाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. First is you need to obtain written documents explaining the investment. Then read and understand such documents. Verify the legitimacy of the investment. Next is find out the cost and benefits which are associated with the investment. Then you need to compare these details with the other investment opportunities that are available, and you need to know the liquidity and safety aspects of such documents, right? So ये सबसे easy and important थे जो मैंने आपको पूरे 5 मार्क करवा दिए हैं. Next, what is meant by interest? Interest क्या होता है? When we borrow money, we are expected to pay for it. Now, this is known as an interest. Interest is the amount which is charged to the borrower for the privilege of using the lender's money. ये हमारा एक important है interest का, तो ये मैं आपको बता देती हूँ. Now, जो हमारा interest होता है वो एक amount होता है जो हम borrower से charge करते हैं क्योंकि उसने हमारे lender की money use की होती है. Borrower is the person जो कि पैसे लेगा, he is the borrower, and lender जो उसको पैसे देगा. तो interest is the amount which is charged to the borrower. क्योंकि obviously borrower ने पैसे लिए हैं तो उसको ही वापस करने हैं ना, तो वो जो जितने पैसे उसने लिए हैं वो उतने तो देगा ही, ऊपर से उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लेंडर को. तो interest is the amount charged to the borrower for the privilege of using the lender's money. Okay, interest is usually calculated as the percentage of principal balance. The percentage rate may be fixed for the life of loan or it may variable depending on the terms of loan. Now next, ये भी हमको clear होगा that what is an interest, right? It is the amount charged to the borrower for the privilege of using lender's money. Now, what factors determine the interest rates? Now when we talk about the factors जो interest rates को हमारे determine करते हैं, when we talk of the interest rates, there are different types of interest rates that the bank offer to their depositors, and there are like many types of interest rates. So let's just not look, you will be confused. Let's just talk about the important topics here. Now the factors that govern these interest rates are mostly economy related. So जितने भी factors हैं हमारे जो interest rate को vary करते हैं वो जो हमारे economy है, market है, इन सब के ऊपर ही dependent होते हैं. अब जो फैक्टर्स हमारे इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, MEC, मैक, RO, रो, देन इकोनॉमिक एंड फैक्टर्स. Right. Now we are going to talk about the factors. So the first is the demand for the money. Second is the level of the government borrowings, the supply of money, inflation rate, महंगाई, the Reserve Bank of India and the government policies which determine some of the variables mentioned above. अब यहाँ पे हमारा जो कितनी मनी की डिमांड है वो हमारा एक फैक्टर है, कितनी मनी की सप्लाई है वो एक फैक्टर है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स एक फैक्टर है, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन रेट एक फैक्टर है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी हमारे कुछ ऐसी फैक्टर्स को डिटरमाइन करती हैं. यही लिखा है हमारे लास्ट पॉइंट का मतलब. सो फैक्टर्स विच डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट्स आर, बिना देखे एक बार बताते हैं. द फैक्टर्स आर द सप्लाई ऑफ मनी, द डिमांड ऑफ मनी एंड द इन्फ्लेशन रेट, द गवर्नमेंट बोरोइंग्स and the RBI, Reserve Bank of India, and the government policies, which will tell us more factors. Now what are the various options available for investment? Now there are two types of options which are available for investments: the physical assets and the financial assets. Physical and financial. Physical means the real things, right? And financial means money related things. Now in physical assets we have gold, diamond, jewelry, commodities and real estate. Okay? And in financial we have shares, bonds, debentures, fixed deposits or FDs. That's all finance related.
Now, after this, we're going to talk about what are the various short-term financial options available for investment. Here we're going to talk about the short-term options. Broadly speaking, savings bank account, money market or liquid funds, fixed deposits. Now there are, when we talk about the short-term, so there are three short-term financial options which are available for the investment. Now we're going to talk about the first option, which is very common and everybody uses it, even your parents, brothers and sisters. Now, the savings bank account. It is often the first banking product that people use. Yes, of course. It is the first banking product that people use because the people are more aware of it than the other investment opportunities. So it is the first banking product people use, which offers a low interest rate, which is 4% to 5%, making them only marginally better than fixed deposits. Now, savings बैंक अकाउंट इज ऑफन यूज बाय पीपल, लाइक इट इज वेरी कॉमन. तो इसको, ये हमारे सारे लोगों का फर्स्ट ही बैंकिंग प्रोडक्ट है जो यूज करते हैं एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, और ये एक लो इंटरेस्ट रेट हमें पे करेंगे, विच इज 4% to 5% ओनली, राइट? That's what we can write. It's sufficient. Now we're going to talk about the money market or the liquid funds. This is a new topic for you. The money market or liquid funds. Now, अब liquid funds से हम कुछ समझ रहे हैं that they provide easy liquidity. Now let's read. The liquid funds or the money market are a specialized form of mutual funds. They are a specialized form of mutual funds. Mutual funds हम पढ़ेंगे आगे. They are a specialized form of mutual funds that invest in extremely short-term fixed instruments. Now, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, thereby providing easy liquidity, and they provide us easy liquidity. Unlike most of the mutual funds, the money market funds are primarily oriented towards protecting your capital. It also protects your capital and it aims to maximize your returns. The money market funds are usually yield better returns than savings account. ये हमारे savings account से better returns हमें provide करते हैं, but lower than the FDs or fixed deposits. Okay, now we're going to talk about the fixed deposits with the banks. Now, the fixed deposits with the banks are also referred to as term deposits. Now, a question can be asked that what are term deposits, right? So, term deposits are fixed deposits. They are term deposits and minimum investment period for a FD is 30 days. Now the minimum period जितने में हमें अपनी मतलब इतने टाइम के लिए हमें अपने पैसे वहाँ रखने पड़ेंगे, that is 30 days. The minimum investment period is 30 days in fixed deposits. Fixed deposits with the banks are for investors with the low risks and may be considered for 6 to 12 months of investment. Now, if we withdraw the money less than 6 months, then FD is likely to be lower than the money market funds. अब हमें फिक्स डिपॉजिट्स और एफडीज में क्या बताया है, दैट दे रेफर टू टर्म डिपॉजिट्स. दे आर आल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स एंड द मिनिमम पीरियड फॉर देम इज 30 days. नाउ ये हमारे बेसिकली 6 से 12 महीने तक होते हैं, एंड अगर हमने 6 महीने से पहले अपने पैसे वापस ले लिए तो इसमें हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लोअर देन दी मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स जो हमारे स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स थे, और ये हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करते थे, एंड दे यील्ड बेटर रिटर्न्स देन दी सेविंग्स अकाउंट, एंड दे आल्सो प्रोवाइड इजी लिक्विडिटी बिकॉज इनका दूसरा नाम है लिक्विड फंड्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी व्हाट आर वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस, एंड दिस इज really important. Long term financial options. Now there are, I guess, 4 to 5 long term financial investments which are available. Now the first is the post office savings. The post office monthly income scheme is a low risk saving instrument which can be availed through any post office. अब post office savings में क्या है, ये जो हम अकाउंट और ये जो हमारा स्कीम है ये हम किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं. It provides an interest rate of 8% per annum. ये हमें 8% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाते हैं, which is paid monthly, और ये हमें मंथली मिलता है 8% इंटरेस्ट रेट. The minimum amount which can be invested is ₹1000 and additional investment in multiples of 1000 can be made. मतलब जो मिनिमम अमाउंट है जो हमें देना है that is ₹1000, और जो मैक्सिमम है that is 3 lakh if single account is opened, and if joint is opened then 6 lakh during a year. And it has a maturity period of 6 years. इसका जो maturity period है वो 6 साल है, 6 years. और इसके एंड में मतलब maturity डेट के बाद हमें एक 10% का बोनस भी मिलता है. बट अगर हमने उस maturity डेट यानी 6 साल से अगर हमने पहले अपने पैसे निकलवा लिए तो हमारा एक
5% का डिडक्शन हो जाएगा और जो 10% हमें मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. मैं आपको एक बार और पोस्ट ऑफिस का रिकैप करवा देती हूँ. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, आप अपना ये पोस्ट ऑफिस का अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं. इनकी मेच्योरिटी डेट होती है 6 ईयर्स एंड ये आपको 8% इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं. और इसमें आप 1000 रुपीज इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं. अगर आपने सिंगल खुलवाया है तो 3 लाख, जॉइंट है तो 6 लाख एंड इसमें आपको मेच्योरिटी डेट के बाद एक 10% का बोनस भी प्रोवाइड होगा. बट अगर आपने ये अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले ही प्री मेच्योर विड्रॉल करवा लिया तो आपको 5% डिनाई हो जाएगा और 10% का बोनस भी नहीं मिलेगा. तो ये था हमारा ऑल अबाउट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड विच इज ऑल्सो नोन एज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ओके, नाउ इट इज अ लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट. ये भी एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है विच हैज अ मेच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स. अब इसकी मेच्योरिटी है हमारे पास पूरे 15 ईयर्स एंड इंटरेस्ट पेबल एट 8% पर एनम. और यहाँ पे भी हमें 8% इंटरेस्ट ही मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली. अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू एनी नेशनलाइज्ड बैंक. ये हमारा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से खुल सकता है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और इसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. एंड अ विड्रॉल, ये जो हमारी लाइंस है ये आपको पढ़ के बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी तो मैं आपको इसको एक लाइक टाइमलाइन आई कैन से और एक मैं आपको अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ ये कि कैसे हम इसके लास्ट के 4 लाइन समझ सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के. ठीक है, तो आई एम टेकिंग दिस फ्री स्पेस बट यहाँ आई गेस मुझे मिल नहीं रही सो आई टेक अ डॉक्यूमेंट वेयर आई हैव सम फ्री स्पेस हियर. ये रहा. अब मैं यहाँ पे आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बताऊंगी अच्छे से लास्ट की लाइंस. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया अपने फाइनेंशियल ईयर्स के लिए टाइमलाइन. सो दिस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर, फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, दीज आर आर फाइनेंशियल ईयर्स. अब अगर हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देखो इसकी मेच्योरिटी डेट तो हमारी 15 ईयर्स होती है. ठीक है, और हम इससे पहले तो पैसे हम ले ही नहीं सकते. बट हमें ये 7th ईयर में एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने 7th ईयर में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. राइट, बट एक कंडीशन पे ही. अगर हमें 7th ईयर में पैसे तब देंगे ये 50% हमें रिड्यूस करके देंगे. ठीक है, ये हमें 7th ईयर में पैसे तभी देंगे जब ये 50% उसमें से डिडक्ट करेंगे. और ये जो 4th ईयर है ना हमारा, 4th फाइनेंशियल ईयर, ये इसके अमाउंट से भी हमारे 50% डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, अब जब इन दोनों 7th ईयर में से 50% डिडक्ट किए और 4th ईयर में से 50% डिडक्ट किए, अब इन दोनों जैसे डिडक्ट किया इसमें से जिसका हमारा लेस अमाउंट होगा, जहां पे भी हमारा लेस अमाउंट होगा ना, ये हमको वो वाली वैल्यू देंगे. अब ऑब्वियसली आपका 7th ईयर में ज्यादा पैसा होगा आपके पास या 4th ईयर में कम पैसा, सॉरी 7th ईयर में कम पैसा होगा या 4th ईयर में, तो ऑब्वियसली बात है 4th ईयर में ही कम पैसा होगा. तो ये आपको 4th ईयर वाला पैसा प्रोवाइड करेंगे, वो भी 50% काट के. ये था हमारा 4 लाइंस का मतलब. ठीक है, अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या कह रहे हैं, ये आपको दे तो देंगे अपना पैसे 7th ईयर में, बट ये अगर 7th ईयर में से भी 50% काटेंगे और 4th ईयर में से भी 50% काट के 4th और 7th ईयर में जिसमें लेस होगा यानी कि 4th ईयर वही वाला पैसा ये आपको देंगे. ये है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, और इसकी मेच्योरिटी हमारी होती है 15 ईयर्स की. इंटरेस्ट रेट 8% देते हैं, इसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, यही था इसमें और ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे बना के आ सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है. नाउ public provident fund so now the post office service clear है हमारा, public provident fund clear है हमारा. अब हम पढ़ेंगे company fixed deposits. Now company fixed deposits, now these are short term. अब देखो ये I'm sorry so these are the short term. ये short term है 6 months के लिए और ये medium term है हमारे 3 to 5 years के लिए. ठीक है, ये important है. तो company fixed deposits are short term 6 months to a medium term
3 to 5 years borrowings by a company at a fixed rate of interest. कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स नाम सुन के हमें पता लग रहा है, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं 6 मंथ्स टू मीडियम टर्म 3 to 5 years, और ये कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स बेसिकली बोरोइंग्स होते हैं, कंपनी ने पैसे बोरो किए होते हैं एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि पेबल मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, ठीक है। एंड देयर इज, ये हमें जो इसका इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें नो टैक्स बेनिफिट्स आर देयर, एंड जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो 6 to 9% पर एनम के लिए होता है, ठीक है। ये इसमें इतना ही था। नाउ बॉन्ड्स, this is important, this can be asked. So bonds, it is a fixed income, we can say, or it is a debt instrument. It is a fixed income debt instrument which is issued for a period of more than 1 year. It is issued for a period of more than 1 year and with the purpose of raising capital, and it is issued by the central or state government. Bonds are issued by the central or state government. Now, a bond is generally a promise to repay the principal along with a fixed rate of interest on a specific date, and that date is the maturity date. Okay, so bonds is a fixed income debt instrument which is issued for a period of more than 1 year. एक ऐसा फिक्स्ड इनकम का इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए हम करते हैं। पर्पस इसका होता है रेजिंग ऑफ द कैपिटल। ये इशू करे जाते हैं, बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड a bond, it is a promise to repay your principal along with a fixed rate of interest on a specific date which is known as a maturity date. That was all in bonds. Now mutual funds ki I'm going to tell you a easy definition of mutual funds. Now mutual funds, it is an organization which pools the money from investors and invest it for getting returns. Okay, now, oh wait, what happened? Yeah, okay. Here. Mutual funds is an organization which pools the money from investors and invest it for getting returns. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मनी पूल करती है इन्वेस्टर्स से और इन्वेस्ट कर देती है गेटिंग रिटर्न्स और प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिडीम्ड बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी। इसको फंड मैनेजमेंट कंपनी देखती है और ये फंड इसके बेस्ड होते हैं एनएवी विच इज द नेट एसेट वैल्यू, राइट। इट इज नेट एसेट वैल्यू क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है, क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी एक फंड की। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड्स में था। Now, what do you mean by stock exchange? Now, according to the SCRA, which is the Securities Contract Regulation Act 1956. Now, it defines stock exchange as any body of individuals, whether incorporated or not, constitute for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying, selling or dealing in securities. अब स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है, बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं और वो एजिस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस, कौन सा बिजनेस, ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पे एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग लोग, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, they have a purpose of regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities. Okay, now next, NSE is important, National Stock Exchange. Now, what is an equity or a share? Equity or share is the same thing. Now, equity, total equity of the capital of a company divided into number of small denominations, each called a share. अब जितना भी कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के टोटल जो इक्विटी होती है ना, वो हम डिवाइड करते हैं छोटे यूनिट्स में और उन यूनिट्स को हम शेयर कहते हैं। अगर हमने एक शेयर खरीद लिया तो हम भी उस कंपनी का मेंबर बन जाएंगे और हमारे पास भी वोटिंग राइट्स होंगे,
ठीक है. Now, what is a debt instrument? Debt instrument is a contract whereby one party lends money to another on some predetermined terms with regard to the rate of interest. Okay? Now, अब debt instrument क्या होता है? Debt instrument basically एक contract है. Debt instrument एक contract है जहाँ पे एक पार्टी पैसे देती है एक दूसरी पार्टी को कुछ टर्म्स जो वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब. ठीक है. It is a contract whereby one party lends money to another on some predetermined terms like the interest rate. वो हमारा कहलाता है debt instrument. ठीक है. अब debt instruments में हमारा टर्म आता है bonds और debentures. जो bonds होते हैं ना हमारे, that is issued by a central and state government, and debenture is issued by public sector. Sorry, and debentures is issued by private sector. Okay. Now we have derivatives. Okay, so derivatives, what are derivatives? Derivative is a product whose value is derived from an underlying asset. Okay, and that asset could be a commodity or index, equity, anything, right? हम derivatives वाले chapter में पढ़ेंगे commodity से. Okay, अभी के लिए हम derivatives इतना जानते हैं कि derivative is a product. Derivative is a product whose value is derived from an underlying asset. ठीक है, ये important है इसमें इतना ही. Mutual funds, it is repeated. I've already told you the definition that a mutual funds is a body operated that pools the money from individuals, investors, and invest in a variety of different financial instruments. Okay. Now, next we have is what is an index. So, an index shows how specified portfolio of share prices are moving in order to give an indication of a market trend, and it is also known as a basket of securities. A basket of securities is known as an index. Basket of securities is known as an इंडेक्स. एंड एन इंडेक्स, एक इंडेक्स जैसे आपकी कॉपीज के आगे भी एक इंडेक्स होता है ना, तो वही यहाँ पे भी इंडेक्स है. दैट द इंडेक्स शोज अ स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो. वो आपको स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो दिखाएगा शेयर प्राइसेस की जो मूव कर रहे होंगे मार्केट ट्रेंड्स को. वो मार्केट ट्रेंड्स आपको इंडिकेट करेंगे, आपको बताएंगे. तो व्हाट इज एन इंडेक्स? एन इंडेक्स इज अ specified portfolio, or an index shows how a specified portfolio of a share prices are moving in order to give an indication of the market trends. A basket of securities is known as an index. Okay. Now we're going to talk about depository. अब depository क्या होता है? जैसे हमारे बैंक्स होते हैं ना और वहां हम जाके अपने पैसे रखते हैं, वैसे हमारे पास डिपॉजिटरीज होती हैं जहां पे हम अपनी सिक्योरिटीज को रखते हैं. ठीक है. A depository is like a bank wherein the deposits are securities in electronic form. This is important. ये लिखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं because they are not some thing we can hold in our hands and just so they are in electronic forms. ठीक है. Now a depository is just like a bank, or a depository is a place where securities are stored in an electronic form. Now what is dematerialization? Important topic. Dematerialization. Okay. Now dematerialization is a process by which the physical certificates of an investor are converted to an electronic form and credit to the investor's account with his depository participant, DP. अब देखो, डीमटेरियलाइजेशन वो होता है जब आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, मतलब डीमटेरियलाइजेशन, मटेरियलाइजेशन मतलब कि आपके पास मटेरियल वाली चीजें हैं. अब मटेरियल डी उसका मतलब उल्टा, मटेरियल वाली चीजों को आप नॉन मटेरियलिस्टिक बना रहे हो, डीमटेरियलाइज कर रहे हो. डीमटेरियलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पे आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और क्रेडिट हो जाते हैं उस इन्वेस्टर के अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. Now, again हम बोलेंगे एक बार इसकी definition. Dematerialization is when our physical certificates are converted into an electronic form and are credited to the investor, his account through the depository participant. Okay? ये था हमारे आज के चैप्टर में. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे which is securities कल. Thank you for watching.